start with the vectors. Okay, vectors telling one thing that we had met while we were discussing that previous that I sent you. You can open your vectors PDF and you can read जहाँ पे प्लेन की इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है. ठीक है, the theory part of doing that. So I'm straight away going to discuss if you give some points or you have a normal meter, so how can you calculate the equation of a plane या कैसे आप normal meter को coordinate करेंगे तीन की equation से. Yeah, it's really short time to directly हम discuss करेंगे. Okay, दो points अगर आपके पास given है previous case में P naught और P naught, तो अगर आपको equation find out करनी है उस line की, मतलब दो points आपके पास है P1 ये P naught है. ठीक है, तो if you need to find out the equation, आपके पास चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको केवल बस एक पॉइंट पता होना चाहिए. ठीक है, और एक वेक्टर पता होना चाहिए. तो वेक्टर में कैलकुलेट करेंगे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके. तो मैंने P naught से P1 कैलकुलेट किया और जो इस वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स होंगे, सपोज ये वेक्टर होंगे, इस वेक्टर के ए बी सी डी कॉम्पोनेंट्स होंगे, और इन दोनों पॉइंट्स P naught और P1 की डिफरेंसेस होंगे. मतलब x1 minus x0, y2 minus y0, y7 y1. ये वाले इसके x1 y1 y1 x1 y1 इसके पॉइंट्स ऐसे x0 y1 y2 और c जो होगा वेक्टर का c कॉम्पोनेंट फिर इसका इट विल बी y1 minus y2. ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट द लाइन लाइक दिस. और अगर मैंने इस वेक्टर को लिखा है तो इक्वेशन जो होगी पैरामीट्रिक फॉर्म में जो हमारे पास आती थी, ये आपके पास इक्वेशन आती थी. इतना हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स होंगे, सिंपली वेक्टर कैलकुलेट करो, कोई भी एक पॉइंट उठाओ और पैरामीट्रिक फॉर्म में यू ऑब्टेन दीस वैल्यूज. राइट, नाउ व्हाट इफ यू नीड टू फाइंड आउट सी व्हाट इफ यू हैव अ प्लेन. ठीक है, कोई भी एक प्लेन है, उस पे एक पॉइंट है आपके पास, एक कोई पॉइंट मिला है. ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब वो कैसे करेंगे आप. प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है as the form ax plus by plus cz plus d is equal to 0. ठीक है, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है, किसी भी प्लेन को डिफाइन करना. अब यहाँ a b c जो हो गया आपको. ठीक है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस नॉर्मल वेक्टर के a b c कुछ कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, आपकी जो इक्वेशन में a b c आ रहे हैं ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके नॉर्मल वेक्टर. राइट, अगर हमको ये प्रूव करना है come to this solution like this. See, डायरेक्टली हम लोग यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं. कैसे आया, कहाँ से आया, कभी से करने के लिए फर्स्ट पार्ट आज की राइट. दिस द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विद नॉर्मल वेक्टर. ये अगर आपका नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन के लिए, पर्टिकुलर प्लेन के लिए, प्लेन है, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर विद कॉम्पोनेंट्स ए कैपिटल A और कैपिटल B और capital C to each of the x and y directions. ठीक है, and passing through the point P naught. So you have a point P naught on this plane with the coordinates x naught comma y naught comma z naught. Okay, you can simply what you can do is you can you can write the equation of a plane as a, this is the component of a b c, and this is the component vector, and x minus x naught, y minus y naught, and z minus z naught, where x, y, z is any point on the plane. Okay, have a point P on this plane with coordinates x, y, and z, and we are going to write the equation of the plane as this. You separate these terms ax, by plus c, and the constant term is separate out, and we take it to the other side of this 0.
and get it as, or you can simply substitute this as capital D. Separate your constant part and write it as capital D. So simply in the equation they express P dot with P dot plus D equal to 0. So whenever you are given a normal vector, or if you don't have a normal vector to the plane, you simply have the equation of the plane, like in this example. Your first step would be to calculate the normal vector. Okay. Once you have, you'll be given an equation of the plane, equation to the plane. Okay. You need to find out the normal vector. First step is to find out the normal vector. Once you have the normal vector, you're going to find out the values of capital A, capital B, and capital C, which are the components of this vector. And using these three values and the constant term as well, you're going to find out the value of the. Okay, so with this you can determine, and with these four values you can determine the equation. For example, in this question, so you are given the equation of a plane, and first you need to find the normal vector equation, normal vector for this particular plane. So write this in the form of ax plus by plus cz plus b is equal to 0. So bringing this 7 to this left hand side. Okay. So I'll compare this to the coefficients of a, b, c, d. So I have the values of a, b, c as 5, minus 3, and c will be equal to 6. Okay. So these will be the components of the normal vector. So n will be 5i, okay, minus 3 plus equivalent to 6, it will be 6. Now, once I have my normal vector, first step that, second step will be to, if you have any point or on that plane, okay, um, you can use it to calculate other information. You don't need to pay attention to this part of this not required. You simply check it the which side of the field as these points belong. You can simply insert these values in the equation of this plane and check for their side. Basic mathematics. That is or do not be asked such questions. This is just for the common understanding. Check your come to this 10th question. So you have to find out the equation of a plane which is passing through your point not containing two vectors v1 and v2. Okay, so you have two vectors in the plane. Okay, v1 and v2, and you also have a point which is defined for this plane. Okay, so this plane passes through a point v0 whose coordinates are given here, and you also have what is the other information given to you about this plane? You have two vectors which are lying in the plane. Okay, so what what all do I need to find out the equation of the plane? I need the normal vector and the point which is passing in the plane, which lies on that plane basically. Okay, so I have the point. Okay, I don't have the normal vector yet. So I need to find out the vector which will be perpendicular to this plane. I have a point. The second thing required for me to find out the equation of this plane is a vector which will be normal to this plane. How can I do that? So we have two vectors which are lying in the plane. If I simply calculate the cross product, I know that when I calculate the cross product of two vectors, I get a vector which is parallel to both of these vectors in whichever plane these two vectors are lying. Okay, so I know for sure that these two vectors v1 and v2 are lying in this plane. Okay, it is given to me that these two vectors are passing through the plane. Okay, so for sure their cross product will be perpendicular to both of these vectors and thus to this plane. Okay, so their cross product will be a vector which will be perpendicular to this plane. So I can take it as a normal vector, right? So what I do is I'm giving these two vectors and calculate the cross product, and that will be my normal vector. Using the normal vector, using the components of the normal vector are a, comma b, comma c, and this point, what I'm going to do once I have the normal vector, simply when I have the ABC values, what I'm going to do is
and take this form of equation and insert all the values here. Okay, what I'm going to do is I'll insert the value of ABC here and the value of x, this x dot y dot z dot, which is the point p dot, which is going to it. Okay, I have the point p dot, which has been defined as x dot comma y dot comma z at this point. 1 comma minus 1 comma z. These are the values of your x dot, y dot, and z dot. Okay, and ABC value I'm calculated once I have the once I have calculated the cross product, which will give you the normal vector. उस normal vector के identity के जो components होंगे, those will be the values of ABC. So basically, I am going to find out the components of the vector. ABC values आ गए, x naught y naught z naught आ गया. Repeat this equation में we put the values and we find out the equation of the plane. Okay, so we have calculated the cross product. We have obtained this normal vector, and we have a point p into x minus x dot y minus y dot z dot and we pick up and we get this equation of it. We have more examples included. Once you know how to calculate the equation of a plane equation of a plane using the normal vector of any point which is given in that particular plane, you don't have no problem. Now we can have to write questions where this concept will be applied. So we had discussed on access theory, right? We're discussing the numerical. Hmm, okay, I think we are on the first one. These are important. So all the questions that we are going to discuss today, please either note them down in your copies or somewhere, because these are the questions which are asked very frequently in your external as well as your internal examination. More probably there will be at least one of the questions from these. You also have a question in your assignment as well. So that question, derivation one has been in your APT exam, has been asked in your APT external. Uh, rather, these questions appear alternatively. Every alternate year there is a question on projection or the derivation if it's switching from parallel to orthogonal. So every year you get one question. So it's important if you understand how you can do it. It's not very complicated. Once you understand and also you be provided with all the resources, all the study material you have. If you have any doubt in the vectors, you have that vectors PDF. If you have any doubt in leadership, but if you have any doubt in understanding that this PDF as well. How we solve the examples with the help of these easily basically be able to design projections. With time, that hard. Also, while referring to your quantities, please
don't rely on the answers that are given in the actually you can take the questions from there, of course, and you give you a general idea of the questions that are asked in your exams, but don't rely on the explanations in the text much. But in learning is not correct also. The answer is that I've if you tend to write in an exam, is easily correct. There is some problems with the numericals, so we need the approach that we use question. You have this is from Sean. So you have a standard text that you display, so it's explained that you refer to standard text. Anyway, coming to this first question, you have a unit cube, which is now projected. Now, the first problem is you have a unit cube, and you can see a cube, which is being projected onto the XY plane. XY plane, the floor of this 3D coordinate system. Okay. Now, the position of the XYZ axis has been drawn, as you can see in the diagram. Okay, this is the figure. Sorry. You have your XYZ axis, right? And this is your cube. And now, using the standard perspective, since you're using the XY plane as your plane, you have to perform perspective transformation with d is equal to 1 and d is equal to 0. Okay. Okay. Now, we have a unit cube whose one of the corners is at the origin. This A corner is at the origin. This is your XY plane. Now, in this diagram, this is your XY plane. This one right here. Okay. So, this is your view plane onto which you're going to project your object, or rather the vertices of this object. Okay, when I'm projecting an object, so what I'm going to do is I'm going to project or obtain an image of the vertices of this particular object, right? So you've been told that these are two cases to consider when d is equal to 1 unit, okay, and when d is equal to 10. 1 and when d is equal to 10. And xy plane, as discussed, this is your view plane right here. This standard or principal plane is xy plane. Okay, now you have a point at uh, d distances, d distance away from the origin. Okay, okay. Where d is the distance from the view plane. Where is your view plane? XY plane is your view plane. This principal plane right here is your view plane. And you have a center of projection. Since it's a perspective projection, you just remember perspective means all the lines the projectors are going to converge at a single point, right? And this point is known as your center of projection. So you have a center of projection from the view plane at d distance. Okay, so we have a center of projection where all these projectors are going to be at d distance from the view plane. This is xy plane, and at d distance, okay, so I move d distances away from the view plane, and that gives me a point on the negative z axis, see, this point C, which is now at minus b, since I was moving in the negative z direction. Okay, because I have to move z distance away from the view plane. So I'll move towards the negative z axis and I'll walk till these steps. Okay, so that point will be, since it is at a z axis, x and y will be equal to 0. This is your 3D coordinate system now. This is your y, this is your x, and this is your z. This will be your minus z, right? So a point here will be 0, 0, which is your origin. If I move away from this origin towards the negative z axis, these points will be defined by 0, 0, 10. Okay, so that z coordinate is my d derivative, d units. Since I have to move d units away from the b plane.
Okay, so that point will be defined where all my projectors are going to meet. That COP will be at now this point C. This is defined as 0, comma 0, comma minus D. Okay, okay. So how am I going to project this image onto this screen that has been placed at XY that has been placed in this XY plane? One thing to note is here, see one thing you can notice, all the points, four of these points, which are the vertices of this two, four of these vertices, A, B, C, D, are themselves lying on the V plane. Okay, so I don't think, or do you think that their positions would change? Since they're already on the XY plane, A, B, E, and D vertices are going to be projected, or their positions, or you can say their projections are going to be obtained on the view plane only. But since these points are already on the view plane, there will not be any change in their after the transformations. There won't be any change in their position. So A, B, C, D are going to be constant only, right? मतलब इनके जो points है, even after I apply this perspective transformations, A, B, C, D तो मुझे इसी view plane पे मिलेंगे, ठीक है? Already ये view plane पे है. I need to find out the projections of these vertices F, G, H, E. Okay, E, F, G, H जो vertices है इनके मुझे find out करने हैं. और वो कैसे find out करूँगी? I'll connect a line which will a straight line which will connect all these vertices to the center of projection. Okay, and wherever these lines cut the view plane, that will be my projection of these vertices. Okay, so see how we can obtain the projection matrix. So perspective, for the standard perspective matrix we had already discussed, if you remember. Okay, here. We already discussed the standard projective case where we had taken our projection at some point C on the negative z axis, right, where the view plane was also xy plane. Isn't this the same case? So can I use this matrix? Of course I can. So this is the matrix which I'm going to use for your standard perspective matrix. This is on the diagonal you have the distance d, and only this term is 0. Okay, since we're going to discard the z coordinate, all the third row is going to be 0 for this. You're only going to obtain the final that will be in terms of x and y only in the direction of x and y. And so I'm going to discard the z coordinates, which was the purpose of projection basically. We needed a function to map the three values of the two. So of course, one of the points will be discarded. In this case, it is the z coordinate. Right, so this is my perspective matrix and perspective projection along this K, capital K, because we take it in the direction of the normal vector to the vector. Right, so xy से है तो xy plane का normal vector is your capital Z, capital Z की direction के along होगा positive Z वाला, hence the capital K rotation. Okay, तो perspective के लिए matrix आपने कौन सी use करनी है? This matrix which is given here. सिंपली दो केसेस है आपके पास, d is equal to 1 और d is equal to 10. आप क्या करोगे, इसमें एक बार d की वैल्यू 1 पुट करोगे फर्स्ट केस के लिए, और सेकंड केस के लिए यू आर गोइंग टू पुट d is equal to 10 in these matrices. Okay, and you're going to multiply this with your original points p matrix. अब ये p matrix ओरिजिनल कहाँ से आएगी? ये p matrix होगा आपका लिस्ट या सेट ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ दिस group. तो A के जितने vertices हैं, A is placed at 0, 0, 0. I have this 0, 0, 0. Okay, and homogeneous form में लिखना है तो last element 1. ठीक है, ऐसे ही A, B, C, D, E, F, G, H सारे के सारे vertices के लिए what you need to do
just write their Cartesian coordinates here in the column form और last में सब आप column लिखोगे. Okay? Since you are representing these using your homogeneous coordinates. Here is your vertices given. This is your matrix. Okay, so you have all the vertices represented by their coordinates in the column form. Okay, last one is sorry one. So you need to multiply this perspective matrix with your original points. Okay, so we're going to get the transform point, which are these. Again, remember, ये आपके कौन से points आए हैं कि homogeneous के form में है. तो last form में देखो जहाँ 1, 1 और 2, 2 आ रहे हैं points. So what you're going to do is, अगर आपको अब ये multiplication ध्यान से सुनो, आपने यहाँ तक भी अगर कर दिया तो ये final answer आपका नहीं होगा, ये माना नहीं जाएगा. आपको क्या करना है, once you have multiplied these two matrices, उसके बाद आप क्या करोगे, ये आपके जो points हैं इनको आप होमोजेनियस पैरामीटर्स जो है इस कॉलम के एंड में देखो जितनी भी वैल्यूज हैं आप इन सारी वैल्यूज को इनसे डिवाइड करोगे. ठीक है, मतलब पहला पॉइंट था 0,0,0 तो ए पॉइंट जो हो गया मेरा वो हो गया 0/1 0/1 और 0/1 which is 0, 0, 0. If I talk about this last point, if this is my h point देखो 1, 1, 0 था. ठीक है, होमोजेनियस पैरामीटर इसका क्या है 2, इसको डिवाइड कर दो 2 से. दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म. होमोजीनियस से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है हमें. ठीक है, तो कार्टेशियन में h की जो ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स आएंगे दे विल बी 1/2 1/2 एंड 0. if you write 1, 1, 0 it will be wrong. So you have to convert it, you unless asked कि आपको homogeneous में calculate करके दे तो this will be the final step. Okay, otherwise you're going to convert these into Cartesian values. अब देखो a dash b dash c dash d dash जो है ओरिजिनल अगर आप वैल्यू से कंपेयर कराओगे तो देखो इनमें चेंज नहीं आया है बिल्कुल भी. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे थे आपके इन चारों पॉइंट्स. ठीक है, तो इनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद भी देखो ये पॉइंट्स यही आए हैं. एफ जी एच ई जो है ये देखो इनके देखो पॉइंट्स ये देखो हाफ 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 हो गए हैं. ठीक है, so this is your final answer. And with D is equal to 10. See, D की जगह I have just inserted the value 10. जहाँ जहाँ भी D की value थी, perspective matrix से भी ये transformation की. Multiply करो with your usual vectors and this is the matrix that you get. Again, homogeneous है. Original points पर लाने के लिए जैसे ये वाला केस था. क्या करोगे? First point will be 10/10 and 0/10 and 0/10. So point will be 1, 0, 0. Okay, this is your D point 1, 0, 0. ठीक है, जितने भी आपके पास वर्टिसेस हैं उनको उसके होमोजेनियस पैरामीटर से डिवाइड करो एंड ऑब्टेन द आंसर इन द कार्टेशियन फॉर्म. Come to this point, turning point 3, discuss this. I'll mark the questions which you have to go through and then send this PDF. Okay, don't go through all the questions. Okay. So this you can see the derivation for the perspective transformation. If you have a standard case, other than the principal plane, which means any other plane as your view plane, तो उस केस में हम लोग perspective की जो है अगेन हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली स्लाइड में. ये हमारा व्यू प्लेन है, ये एक रेफरेंस पॉइंट आर नॉट है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट और ये नॉर्मल वेक्टर है. दो चीजें जो मुझे किसी भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए चाहिए, एक एन वेक्टर नॉर्मल जिससे कंपोनेंट्स n1 into n3 है, एक रेफरेंस पॉइंट उस प्लेन पे जो लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट. ये पी पॉइंट है एक्स वाई जेड जिसका मुझे प्रोजेक्शन अगर दिस इज माय सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एट ओरिजिन. ठीक है, आई देखो यहाँ पे प्लेस्ड है ओरिजिन पे. तो अगर मैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इस पॉइंट से कनेक्ट करूँ तो ये मुझे प्रोजेक्शन इस पी पॉइंट का पी डैश पे यहाँ मिल गया. ठीक है, इस व्यू प्लेन को जहाँ पे भी ये लाइन कंसिडर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसकी कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश डैश एंड जेड डैश. नाउ see let this is your original point which
is being projected onto the view plane at point P dash. If I connect this, अगर देखो OP लाइन देखो OP लाइन पे ही आपकी OP डैश लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करूँ, एक P O, एक ये वाला वेक्टर, ठीक है, और एक P डैश O, एक ये वाला वेक्टर, ठीक है। दिस इज माय V2 वेक्टर, दिस इज माय V1 वेक्टर, दोनों की देखो डायरेक्शन सेम है। तो किसी भी एक वेक्टर को मैं स्केलर मल्टीपल दिखा सकती हूँ गिवन वेक्टर का, since they are both pointing in the same direction, as we have already studied, कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं which are pointing in direction, तो उन दोनों वेक्टर में रिलेशनशिप ऑब्टेन की जा सकती है। वो ये है कि आप दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में शो कर सकते हो, ठीक है। ये रिलेशनशिप इन दोनों वेक्टर्स के बीच में होगी। मतलब इसके V2 के जो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो V1 के स्केलर मल्टीपल होंगे। कोई ना कोई एक स्केलर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता होगा कि जिसके लिए ये रिलेशनशिप को होल्ड करती है। तो मैंने क्या किया, स्केलर आर टेकन एज अल्फा, ठीक है। अब दोनों वेक्टर्स देखो P नॉट 0 और P 0, ठीक है। दिस P नॉट, P डैश 0 और P 0, P 0 is your this this larger vector, okay. Now अब अगर मैंने इस P नॉट वेक्टर है मेरा और P डैश 0 वेक्टर है, तो इसके बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो मैंने क्या किया, अल्फा इस यूनिवर्स में और बता दिया कि P 0 जो वेक्टर है उसको मैं कोई भी स्केलर मान सकती हूँ, ठीक है। या फिर P डैश O का आई कैन टेक द स्केलर मल्टीपल ऑफ P O वेक्टर, राइट। तो इसके कंपोनेंट्स को अगर मैं इक्वेट करूंगी, ठीक, I can write these as, look here, x dash can be written as alpha into x. X dash is the component of this P dash O vector. अगर इसके P dash O वाला जो V वाला वेक्टर है, अगर इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स निकालूं तो वो क्या होंगे, x dash minus 0, y dash minus 0, z minus 2, z dash minus 0. तो x dash, y dash and z dash, ठीक है। तो इस x dash, y dash, z dash को मैंने इक्वेट कर दिया। बड़ा वाला जो वेक्टर था एक्स वाई जेड, सेम इसके भी कंपोनेंट्स आएंगे, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी which will be which can be expressed in this form, कि x dash y dash z dash जो है ये जो कंपोनेंट्स है एक वेक्टर के, वो स्केलर मल्टीपल होंगे दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो वो जो स्केलर मल्टीपल है मैंने अल्फा ले लिया, तो x dash is equal to alpha x, y dash is equal to alpha y, and z dash is equal to alpha z मैंने लिख दिया फर्स्ट स्टेप हियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज आई कैन सिंस दिस पॉइंट p dash जो है ये कहीं भी हो सकता है आपके प्लेन में, ठीक है। प्लेन में है ये सबसे बड़ी बात, ये जो लाइन थी आपकी प्रोजेक्ट की इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को, तब जाके आपके पास p dash आया था कि ये लाइन जो थी प्रोजेक्ट ये आपका प्लेन इंटरसेक्ट कर रही थी। तो कौन सा ये जो आपका p dash है पॉइंट, इट इज लाइन इन द प्लेन, तो ये प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने अब देखो नॉर्मल वेक्टर रेफरेंस पॉइंट का काम आया। नॉर्मल वेक्टर रेफरेंस पॉइंट को मैं यूज कर सकती हूँ प्लेन की इक्वेशन को कंपोनेंट्स वेक्टर के, और x माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट एंड z माइनस z, ठीक है। अगर मैंने या आप समझे a b c d इज इक्वल टू 0 लिखो ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो a b c d की जगह आप नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स पुट करो और एक्स वाई जेड की जगह आप इस रेफरेंस पॉइंट को पुट करो, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम यही काम होगा एक्चुअली जो हम प्लेन की इक्वेशन डिफाइन करते हुए जब चलते हैं, n1 x माइनस एक्स नॉट प्लस n2 y माइनस वाई नॉट प्लस n3 z माइनस z नॉट,
Okay, is equal to 0. This will be the equation of the plane, and here instead of x, y, and z, you can put this point x dash, y dash, and z dash. So you will get this equation n1 x dash, n2 y dash, and n3 z dash, and a constant term d naught. d naught की वैल्यू आएगी n1 x naught, ये जो आपके टर्म्स बच गए थे, ठीक है, n2 y naught and n1 z x naught, ठीक है. तो once you have these terms, आप क्या करोगे, ये x नॉट y नॉट और z नॉट का आपको पता है, आप इसे x y z की टर्म्स में लिख सकते हो. तो रिप्लेस करोगे वैल्यूज यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, x नॉट y नॉट और z नॉट की जगह विल राइट अल्फा x अल्फा y एंड अल्फा z. अल्फा कॉमन लो और बचा हुआ पूरा टर्म डिनोमिनेटर में ले जाओ. अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है. Once you have the value of this alpha, what you can do is perspective वाला transformation की matrix में you can represent these points. Okay, so we'll get the transformation matrix as this. और हमेशा याद रखना this is your homogeneous representation. ठीक है. अगर इस मैट्रिक्स को आप अपने उल्टे पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get the transform points x dash y dash z dash but in the homogeneous form. Homogeneous form में से application of this matrix to homogeneous representation, which is this two matrix, which will be your x, y, z, and 1. So you'll get the points as d naught x, d naught y, d naught z, comma. Fourth term is your n1x, n2y plus n3z. This is your homogeneous parameter value. This is your x, y, and z value. So what you're going to do is you're going to get the transform points by calculating x by h, y by h, and z by h. Okay, this will be your final answer. Not just the multiplication of this matrix to the relation point. You need to convert these back to your Cartesian coordinate, homogeneous relation. Okay, so you have a question. Find the intercepted projection onto the region at z is equal to d, where the center of projection and projection is at your origin. तो ऊपर केस डिस्कस किया था, ठीक है. तो यहाँ पे see z is equal to d is parallel to your xy plane. This is your xy, this is your z coordinate, right? Now instead of taking the v plane at z xy plane in the xy plane, आपने z is equal to d पे कहीं अपना v plane जो है वो प्लेस किया है. It is parallel to xy plane, ठीक है, xy plane से parallel है. सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ है आपका, ओरिजिन प्लेन, 0,0,0. अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोई भी पॉइंट चाहिए जो यहाँ से पास होता हो. इस प्लेन से कौन सा, इस व्यू प्लेन से which is at z is equal to d, कौन सा पॉइंट पास होगा, ऑफ कोर्स जो z एक्सिस वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसे, ठीक है. दिस इज माय z. इफ आई हैव अ प्लेन इन माय व्यू प्लेन, तो z एक्सिस ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट में z एक्सिस वाला ही उठा लूं तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा. तो वो पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया 0,0, ठीक है. Second thing I need is my normal vector. Normal vector आपको पता है, you can take it along the positive direction. So you can take it as this 0,0,1, which is your k vector. Basically, n is equal to capital K is your normal vector for this plane. I have the value of capital N. I have the value of capital R. Capital R naught. Reference point और normal vector है. Plane की equation में put these values and you can find out the value of D naught. यहाँ देखो d naught की वैल्यू कहाँ से आई थी, n1 x dash into y dash plus n3 z dash. तो मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की, n1 x dash, n1 x naught plus n3 और n1 into 0, n1 into 0 है, n3 is 1, these two terms will be 0, 1 into z naught की वैल्यू क्या थी, 1 into d,
डी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास डी। डी नॉट की वैल्यू डी है तो जो पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आप लिख दोगे डी डिफरेंस एंड n1 into n2 जो है n1 was 0, n2 was 0, n3 की वैल्यू was 1. This is your standard matrix which we get for this particular case. Okay, so you can easily calculate the matrix form of any such case. ज़्यादा से ज़्यादा देखो डिराइव करने के लिए आएगा यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मेथड्स टू डिराइव इक्वेशंस, या आपको पॉइंट्स गिवन होंगे जैसे इससे पहले वाले यूनिट वाले केस में देखा था। ओके, और आपको फाइनल पॉइंट्स निकाल के देने होंगे। So in that case, you only have to perform a single matrix multiplication once you do the perspective matrix transformation. Transformation matrix. Transformation matrix पता है आपको वैल्यू भी और जो एन कॉम्पोनेंट्स भी आपको पता है। उसके बाद सिंपली आपको ओरिजिनल पॉइंट से मल्टीप्लाई करके यू हैव टू गेट दीस पॉइंट्स। होमोजेनियस में आएगा तो you need to convert them back to coordinate by dividing by these homogeneous parameters, the values which we have obtained above. Right? Next we have again if you have see now instead of your origin, you're going to take your center of projection at some point A, B, C. Same procedure follow करो P point और P dash को जो I पोजीशन है आपकी C पोजीशन है A B C से ये वेक्टर को ज्वाइन करो। इस वेक्टर को देखो दो वेक्टर्स आपको सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए मिलेंगे। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल शो करो। दोनों के बीच में इक्वेशंस फाइंड आउट करो z डैश x डैश y डैश z डैश और x y डैश के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ दीस कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? छोटा वाला जो वेक्टर है p डैश c, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे x डैश माइनस a, y डैश माइनस b एंड z डैश माइनस c। और जो बड़ा वाला आपका जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स होंगे x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c। ठीक है, तो x dash minus a is equal to alpha of x minus a, y minus b is alpha of y minus b। ये रिलेशनशिप आपने बताई और x dash y dash z dash के पॉइंट पे आपने रीराइट कर ली। इक्वेशन मिल गई, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो, अल्फा की वैल्यू मिल गई, उसके बाद ठीक once you have the value you can replace the value आपकी इक्वेशन में given है। now आप क्या करोगे, this is your 3 point, you're going to translate this to your origin। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट वेक्टर याद करो, ट्रांसलेट करने के पहले हम लोगों ने अलाइनमेंट वेक्टर कभी पढ़ा था, अलाइनमेंट करो। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली once you have translated this, what you're going to do is you're going to project your point using your, once you know the perspective transformation method। अभी इसका पहले वाला क्वेश्चन में perspective ओरिजिन के अबाउट जब आपको समझती ओरिजिन क्या था तब आपको पता था कि कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। वो वाली मैट्रिक्स इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिए हैं, पर्सपेक्टिव वाली मैट्रिक्स लगाओ, उसके बाद इनवर्स ट्रांसलेट परफॉर्म कर दो ऑपरेशन जो है इनवर्स ट्रांसलेट कर दो पॉइंट। ठीक है, तो पहले वाले में ट्रांसलेशन वानिशिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है और ये आपको बट अगर एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में आता है तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी ओके इफ आर so that's the principal answer to x if you want to do it but hardly ज़्यादा कुछ नहीं आता क्वेश्चन। ओके, बट अगर आता भी है, अगर एक डायरेक्शन में है जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग है तो सिंपली यू आर गोइंग टू टेक योर डिस्टेंस d जो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन का डिफरेंस है एंड ABC वाला जो पॉइंट है आपके पास
ठीक है, उसमें मैं सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। जिस भी डायरेक्शन में बोला गया है तो उसमें आप क्या करोगे, एक एडिशनल टर्म ऐड करोगे विच विल बी डी ओवर उस डायरेक्शन का कंपोनेंट। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में था तो डी बाई एन वन, वाई की डायरेक्शन में प्रिंसिपल पॉइंट निकालना है तो डी बाई एन टू ऐड करोगे डी में, और जेड की डायरेक्शन में तो डी बाई एन थ्री। तीन प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं तो तीनों में आप ऐड करो। ठीक है, तो थ्री प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट्स है एक्स वाई जेड के अलोंग। कैलकुलेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसकी कैलकुलेशन। पैरेलल प्रोजेक्शन के लिए आओ लास्ट। पैरेलल प्रोजेक्शन सबसे पहले एक्स वाई प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए देखो आपके पास दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये जो फ्लोर पे है दिस इज योर ब्लू प्लेन। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट P, दिस प्रोजेक्शन इज नाउ अप टू एक्स वाई point P dash which is at x dash y dash and comma 0 location, and then the vector of V which is parallel to this P dash P vector given by these components are A comma B comma C. Okay, what you can do is again एक वेक्टर V है आपके पास जो डायरेक्शन बता रहा है P डैश से P की। ये वेक्टर V एक्चुअली प्रोजेक्टर्स की जो प्रोजेक्शन लाइन है उनकी डायरेक्शन बताने के लिए यू हैव अ वेक्टर V। आपने क्या किया, P और P डैश को ज्वाइन किया तो यू गेट अनदर वेक्टर V2 से। यू कैन अगेन सेम फंड अप्लाई करेंगे V को। I can go as the scalar multiple of this vector V2. So what I'll do is I'm going to equate the components of both of these vectors. तो पहले वाले वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स है e पावर v पावर c, सेकंड वाले वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए मेरे पास x माइनस x डैश, y माइनस y डैश एंड z माइनस 0, राइट। So here you have the x minus x dash, y minus y dash and z minus z. That is going to get k8, kb and kc. K is your scalar multiple, जिससे आप तीनों की वैल्यूज के कॉम्पोनेंट्स को जब आप इक्वेट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, obtain the value of k. Since we know that this z dash, this point z dash, this is 0. Since your v plane is defined at z is equal to 0, xy plane. Since you have that z is equal to 0, you have your xy plane, which is your z dash value 0 है यहाँ पे. So I can obtain the value of k from this third equation. So 3 times minus z upon c. Okay, so I'm going to insert this value in the first two equations and I'll get the value of x dash and y dash in terms of x, y, z. So I have obtained these two equations, x dash and y dash. So this is the transformation from x dash, from x to x dash and y to y dash. If I represent it in a matrix form, this is the matrix for the parallel transformation that I'm going to get. Parallel. Okay. According to these equations only I found out, using these two equations I found out this matrix. क्योंकि देखो y में कौन सा टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, z से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई नीड टू प्लेस दीस टर्म्स इन द लास्ट कॉलम। तो इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके ये पैरेलल प्रोजेक्शन वाली मैट्रिक्स आज बना देंगे। ओके, so we are going to find out the transform matrix as P dash is equal to, we're going to multiply this parallel matrix, projection matrix, with your original points. Again, this is your 3 cross 3 matrix. You're going to, what you're going to do is, last में 0 है आपके तो z वाले सारे टर्म्स आपके दोनों 0 है। What you're going to do is 3 cross 3 की मैट्रिक्स है, होमोजेनियस में लेना है, तो आप इसे 4 cross 4 की मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। नाउ अगर जनरल केस है, ठीक है, कि एक्स वाई प्लेन के अलावा instead of this xy plane, your plane could be any arbitrary v plane, any arbitrary plane which is oriented in your 3D space. So that plane is again going to be determined by two very important
data, which will be first will be your normal vector to that particular plane, and a point which is lying on that plane for reference. Okay, a reference point and a normal vector. Using these two pieces of information, you can calculate the equation of the plane, right? Once you have the equation of the plane, what you want to do is see. Now, you have to get the parallel projection matrix right the direction of v vector. So this is the v vector. अब क्या करोगे? Now here is the case where you will use that alignment vector that we have calculated previously. Okay. So what you're going to do is, see, first we're going to translate this reference point so that now it coincides with your origin. The first step is your this translation. Okay. We're going to translate it by R not distance. Second would be to perform the alignment so that this normal with the end of the movement, the this vector, is now going to point in the direction of positive z. So after applying transformation, the next step would be to align this n vector along positive z, which is what we had done in our alignment. Right? We know how to align two vectors. We're going to use that matrix, and then you're going to perform this projection by simply multiplying this with your points, and then after you are done selecting your points, what you're going to do is basically realign it back to its original orientation, this normal vector, and reposition your R naught so that it's now lying. Okay, so these are the steps which are given here. So after applying these five transformations, you're going to get a parallel transformation, parallel projection transformation matrix. Okay, so this is your final matrix which you get. ट्रांसलेशन के लिए सिंपली रेफरेंस पॉइंट देखो आपने यूज किए हैं यूनिवर्स और दोनों के लिए वन मैट्रिक्स will be having the values of this will be having minus okay we have alignment vector में आप करें ये जो हम लोग लैम्डा और एन की वैल्यूज लेते थे सिंपली इसमें हम लोगों ने एबीसी की वैल्यूज आपको बेसिकली पुट करनी है इसमें तो we're going to insert the values of these two vectors in the radio alignment. Last आपके बच्चे parallel projection करें that you already know. Origin के अबाउट अगर आपको parallel projection perform करना है ये रही इसकी matrix. Multiply these two together and you get your final matrix as this. Okay. Alternative method could be you can use a projector to find the intersection point. Okay. Last is your oblique projection. You need to find out the oblique projection matrix for this. If you give this much of you can specify these three matrices and you specify these steps, it will be enough. Okay, no need to calculate or you need to describe how you want this alignment vector. You need to describe how you want this parallel vector matrix, this third matrix here, how you want the inverse of these matrices. You don't need to explain all of this in detail. If you have a question where you have to derive the final matrix of this one, you can simply explain these steps, these five steps, these five matrices to write this equation, and if you give these three matrices, it will be okay. You get now you have the oblique projection case. Oblique projection में remember you have your region here. The projectors are slanting or at and they are inclined with respect to your region. Okay. So again, consider your view plane as xy. XY plane is your view plane. This is your original point P, 0, 0, 1, and you need to find out its projection on this xy plane, which is the projection is at P dash, x dash, y dash, and 0. Z dash would be 0. Okay, we have used another term for this. While discussing cabinet and cabinet projections, if you remember, I had used a variable called f for foreshortening. Okay, because in oblique you have two cases. You have cabinet and cabinet. Cabinet has theta is equal to, right?
It means our cavalier have theta is equal to 62. And in cavalier projection, your lines were foreshortened. The lines which are perpendicular to the when I projected these lines, I got the same line. And I performed cabinet projections, that is the second one in which the theta was 63.4 degrees. The lines which were perpendicular to xy plane were foreshortened to half of their length. So in the first case, I'll take the value of this particular parameter. We'll see how this particular f parameter as f1, and in the second case, in case of cabinet projection, I'll take f value as 1 by 2. This is your foreshortening, and it depends on case to case. Okay, we have two cases here. Now, you say oblique projection can be specified by number f, which is a foreshortening. Okay, line L perpendicular to the xy plane will be foreshortened. कितना foreshortening होगी वो डिफाइन करने के लिए you have this f factor and an angle theta जो angle ये बना रहा है प्रोजेक्टर आपका ये plane के साथ. You see, this is the projector आपका PP dash line and it is intersecting your P plane at P dash. So the angle it is making with this plane is your theta. Okay, so this is your theta, and this is since this is a line, this 0 p. If I take this p0 line, and it is a line which is perpendicular to xy plane. So this is the projection of this line. OP का projection है, this OP dash. इस line L का projection है, इस line L का projection है ये OP dash, right? तो ये basically foreshortened line है. ठीक है, मतलब ये L जो line होगी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म होगी लाइन एल डैश में. तो एल डैश जो है वो एफ मल्टीपल होगा बेसिकली आपकी ओरिजिनल लाइन का. ठीक है, अगर कैवलियर है तो ये एफ की वैल्यू 1 होगी फॉर दीज परपेंडिकुलर लाइंस. ये जो सेट है एल जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. कहीं भी हो सकती है ये लाइंस परपेंडिकुलर वाली. ठीक है, इन केस ऑफ cabinet projections this f will be taken as 1 by. And back to this, you have your L line, you have your origin point, you have your projected point. Okay. Since this P naught P will have this, I'm taking a vector V. Vector V again is giving me the direction of the projectors. एक वेक्टर V है और एक वेक्टर मैंने ऑप्शन किया P P dash को ज्वाइन करना है. ये वाला वेक्टर है. अब दोनों को अगेन आई कैन रिलेट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में ऑप्टेन कर सकते हैं. ठीक है, and if it's not given, you simply going to take this vector U or projection. उसकी आप डायरेक्शन you can obtain by simply using the components of these two points, using the coordinates of these. Okay, अगर इस V vector के components को the same direction में going to calculate it as x dash minus 0, y dash minus 0, minus 1. So vector will comes out to be here it is given, so u dash 2 x dash I plus y dash 2 minus. So originally your vector had the components A, comma B, comma C. Obviously vectors जो है going to equate them, and the factor which I have used is this f factor right here. So now your A will be equal to x dash, which will be equal to f cos theta. A will be equal to y dash, which will be equal to f sin theta. If you see, this is your foreshortening line, right? This is the length of the line which you have obtained after the projection from this triangle O P dash, and let it be A point and let it be B point. Okay, from this triangle OAP dash, you can see if this is your theta, sin theta would be perpendicular upon hypotenuse, right? This is your sin theta. This is your perpendicular, which will be y dash upon hypotenuse, which is your f. So y dash over f. Y dash will be
f sine theta, and x dash will be similarly f cos theta. And c dash, c will be the component will be c component will be simple minus 1, 0 minus 1. Okay. This was x dash minus 0, so simply a की value थी x dash, y dash की value मेरे पास आई थी c component की value आई थी y dash, जो मैंने यहाँ से निकाली, which is f theta, and your x dash is f cos theta, and c component की value है simply 0 minus 1, which is minus 1. abc की values आ गई है. You can simply insert these values, and this is the transformation which you get. Once you have the relation between your x dash, y dash, and z dash, x or y में आप you can find the relation. And this is the magic. Okay. Again, for see we have given an example for cabinet projections with theta given, and even with cabinet with theta is given. For cabinet, you are going to take the f value as 1. For cabinet projections, you are going to take the f value as half. And theta की value put करके calculate the values of sin theta, cos theta, and we can obtain the matrices for the projection of each time. Okay, so these are the matrices for the cabinet. इसमें theta पता चलेगा, आपको theta मिलने के लिए कठिन. You have your origin points. You can multiply these points to get the transform points. Okay, these are your homogeneous coordinates. यहाँ पे since the value is 1, तो आपके पास जो transform points आएंगे वो same आएंगे. 0 by 1 will be 0. 2 by 2 by 1 will be 1 only. Okay, but again you need to cross check your values before you give your final values. Partition में भी निकाल के देना final value. So this completes your projection. Go through this PDF, right? And I'm not you can now your copies and these questions be able to understand them. Okay, that is all. This is the maximum that they study has from this topic. Using the complete text, you have the text for your reference. Text भी है इसमें. The concept in theory has been explained in the starting of as we have the derivation. Solve the examples as well. Okay. Do you have any doubt in this? We start with your 3D clipping and curves. Have any doubt in this?